Assalamu alaikum everybody. So welcome back to climate change. आज हम लोग वीक 14 के रीडिंग्स कवर करेंगे and for week 14 and I think for the next 2 weeks or so we are going to be looking at climate change in the media and climate change and media. So today we'll basically be looking at different visual media that is available to us in this day and age, and we'll be looking at how that has interacted with environmentalism and how media is used to sort of create certain reactions in the viewers or in the consumers essentially. But we'll be looking at different types of media. So before we go ahead, I want you to take a minute each and look at these photographs that I'm about to show on the screen. So just take a minute, observe this, and make sure that you note down your reactions, right? In terms of what is it that you're seeing, what are you experiencing when you are seeing these photographs, and essentially what your reaction is, कि आप किस तरह से engage हो रहे हैं इस picture के साथ. So this is the first one. We'll have this for 30 more seconds और फिर मैं अगली slide पे जाती हूँ. ये भी आप लोग याद रखें कि आपने इस टाइप की और फोटोग्राफ्स कहाँ देखी हुई हैं और अगर देखी हुई हैं. ये सेकंड फोटोग्राफ है, इस पर भी हम 1 मिनट स्पेंड करेंगे. सो दिस इज़ बेसिकली वेरी ओल्ड. इसमें आपने डेट जो देखी होगी फ्रॉम 1860s, राइट. सो दिस इज़ मोर देन 100 years ओल्ड. उस वक्त कैमराज की नई टेक्नोलॉजी सारा कुछ आया हुआ था. सो दिस इज़ बाय कार्लटन वाटकिंस और इसने ली थी तस्वीरें योसेमिटी वैली, या जो कि अब योसेमिटी पार्क है इन द यूनाइटेड स्टेट्स. तो आई वॉन्ट यू टू लुक एट कि आपका पर्सपेक्टिव किस तरह से आ रहा है इस फोटोग्राफ के ऊपर, एंड व्हाट डू यू सी. जो आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है कि आप इसमें क्या क्या चीज़ें देख रहे हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं भी देख रहे. एंड इफ़ यू हैव सम टाइम टू लुक इन टू द हिस्ट्री ऑफ योसेमिटी वैली, क्योंकि उसके अंदर आपको आंसर मिल जाएगा इसका. और फिर ये हमारे पास उसी फोटोग्राफर का एक और एंगल से योसेमिटी वैली की फ़ोटोग्राफ है. सो अगेन कीप ऑब्जर्विंग दिस इन. आप इस चीज़ पर फोकस करें कि आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है, क्या चीज़ नहीं नज़र आ रही, और आपका रिएक्शन क्या इवोक हो रहा है. राइट. सो बेसिकली इन फोटोग्राफ्स में जो स्पेशली कार्लटन वाटकिंस वाली योसेमिटी वैली की थी, इसमें से आपको क्या रिएक्शन हुआ, वी शुड डिस्कस दैट ऑन वेडनेसडे. बट बेसिकली इन दोनों तस्वीरों में आपने देखा होगा कि वो विल्डरनेस का एक फ़ोटोग्राफ है. सो इट्स लाइक नज़र तो यही आ रहा है कि इट्स लाइक इन इट्स नेचुरल स्टेट. कोई इधर इंसान वगैरह नहीं, यू डोंट सी एनी सेटलमेंट्स, यू डोंट सी एनी ह्यूमन बीइंग सॉर्ट ऑफ इंटरेक्टिंग विद दिस इन्वायरमेंट, और वो उसको कोई हार्म शाम कुछ भी नहीं कर रहे. हमें ये नज़र आ रहा है. हो सकता है आपको कुछ डिफरेंट नज़र आया हो. With these portrayals of wilderness, Cox and Pizzullo, they're arguing, they depicted nature as separate from human culture. ठीक है, क्योंकि इसमें ज़ाहिर है नेचर की फ़ोटोग्राफ है, राइट. तो हमने जो डिस्कस भी किया था कि 19th सेंचुरी में हमारे रिलेशनशिप टू नेचर was different compared with what it is now. उस वक्त nature was something that was grand, it was something intimidating. Now it's something that we sort of exploit. So उसमें आपको दिखा रहे हैं एक सेपरेशन बिटवीन मैन एंड नेचर, बिटवीन ह्यूमन कल्चर एंड नेचर.
The viewpoint of these paintings or these photographs, they distance the human observer by viewing the landscape from above or in control of nature. A process एक डिपिक्ट करा था एक प्रोसेस ऑफ कॉन्क्वेस्ट को, क्योंकि अगेन मैंने आपको जो पहले कहा था कि आप अपना पर्सपेक्टिव देखें कि क्या आ रहा है. फॉर एग्जाम्पल अगर इधर आ रहा है तो आपका पर्सपेक्टिव आ रहा है somebody who's on the top of whatever this mountain या जो भी है, and you're looking down. ठीक है, तो इसमें एक वो आपकी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से भी यू सॉर्ट ऑफ कम अप एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्क्वेस्ट. तो इवन दो इसमें नेचर दिखाई जा रहा है, बट बिकॉज द फोटोग्राफ इज एसेंशियली बीइंग टेकन बाय अ ह्यूमन बीइंग, तो उसमें योर रिलेशनशिप टू नेचर इज़ वेरी वेरी डिफरेंटली डिफाइंड, क्योंकि ये ऊपर से आप देख रहे हैं, राइट. क्योंकि द गाय कुड हैव आल्सो बीन सिचुएटेड हेयर, और इधर से भी तो वो तस्वीर ले सकता था इस पूरी वैली की, बट दैट्स नॉट व्हाट ही डिड. एंड सेम गोज़ फॉर हेयर. इसमें भी दी ओनली रीज़न यू वुड लुक अप इज़ कि अगर आप इस दरख्त का टॉप देखना चाहें, बट अदरवाइज यू बी लुकिंग डाउन. आपकी जो फोकस आ रहा है वो डाउन की तरफ आ रहा है, राइट, कि ऑल ऑफ दिस इज सॉर्ट ऑफ बिलो यू. तो ये एक एस्पेक्ट आ जाता है फोटोग्राफी का. इवन अगर जैसे मैंने जो पहले पोलर बेयर वाली दिखाई थी, ये तो बिल्कुल आपके सामने आ रहा है, बट लेटर ऑन आई थिंक आई हैव अनदर पिक्चर. इफ़ आई डोंट तो यू वुड रिमेंबर है कि वो एरियल व्यू जो आता है कि आसमान से तस्वीर खींची हुई है या ड्रोन से फ़ोटो ली हुई है, और उसमें यू सी के एक आपको नज़र आ रहा है पोलर बेयर जो कि मे बी इस वाले आइस उसके ऊपर जो है वो स्ट्रैंडेड होगा, बट योर व्यू विल बी फ्रॉम अबव, यानी कि आपकी आँख जो है वो इधर से देख रही होगी ऐसे करके, राइट. तो अगेन दैट्स लाइक अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव कंपेयर्ड विद दिस वन. और मैंने एक और चीज़ आपसे पूछी थी कि इन तस्वीरों में से क्या चीज़ लेफ़्ट आउट है. वो मैंने क्यों पूछा था, क्योंकि व्हाट वाज लेफ़्ट आउट ऑफ लैंडस्केप फोटोग्राफ ऑफ द वेस्ट, क्योंकि उन्होंने ऑब्वियसली ये अमेरिका वाली साइड ही वेस्ट किया, उन्होंने इंक्लूड किया अपने डिस्कशन में. बट आई थिंक लैंडस्केप फोटोग्राफ ऑफ एनी प्लेस, उनमें जो चीज़ नहीं है वो भी इज़ जस्ट एज इम्पॉर्टेंट एज वॉट वॉज इंक्लूडेड, राइट. क्योंकि मैंने आप लोगों को कहा था कि आप इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री अगर जाके साइट पर देखेंगे तो देयर वर सेटलमेंट्स, राइट. सो द वे दैट दीज फोटोग्राफ्स आर प्रेजेंटेड आर एज ए कार्ल्टन वॉटकिन सॉर्ट ऑफ डिस्कवर्ड योसेमिटी वैली, और उससे इंडिकेशन क्या आती है कि ही वॉज द वन हु फाउंड दिस वैली, कि ये वैली एग्जिस्ट करती है. बट जो इसकी अगर आप हिस्ट्री वगैरह देखेंगे तो इधर देयर वर सेटलमेंट्स, जो नेटिव पॉपुलेशन उनकी थी, नेटिव इंडियंस वाली पॉपुलेशन थी, बट देन वो इसमें से इरेज हुई हैं. यू डोंट सी एनी ऑफ देयर सेटलमेंट्स. मे बी वो हो सकता है कि इस फोटोग्राफ के इधर एज पर कोई सेटलमेंट होती, बट जिस तरह से वॉटकिंस ने फ्रेम की है अपनी तस्वीर, उसमें आपको कोई भी इस तरह का नहीं नज़र आ रहा कंडीशन, राइट. सो यू डोंट रियली सी अ लॉट ऑफ थिंग्स, इवन तो आपको लगता है कि जब आप इसमें ऊपर वाले पर्सपेक्टिव से देखें, सो यू हैव लाइक अ वेरी क्लियर व्यू ऑफ एवरीथिंग, बट देन अगेन बिकॉज द फोटोग्राफर इज़ इन कंट्रोल, सो दे गेट टू डिसाइड कि उन्होंने आपको किस चीज़ को फ्रेम करके दिखाना है. सो अगेन दीज आर टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स स्पेसिफिकली जब आप लैंडस्केप की फोटोग्राफ्स देखते हैं. फिर एक और ये इंटरेस्टिंग सा आ गया था, क्योंकि दिस इज़ लाइक अ मोर मॉडर्न टेक ऑन दीज थिंग्स, राइट, अ मोर मॉडर्न टेक ऑन एनवायरमेंटल अवेयरनेस रेजिंग एंड ऑल दैट. ये एक डॉल्फिन की आई थिंक उन्होंने पिक्चर जो है ब्लो अप करके उस पर लगाई हुई है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में. तो दिस इज़ बेसिकली इंटेंट, क्योंकि ऑब्वियसली दिस इज़ द स्काई स्क्रेपर, राइट. सो एवरीबडी इज़ गोइंग टू बी एबल टू सी इट. जिस तरह अक्सर न्यू ईयर्स पे फॉर एग्जांपल या इवन जो कोई बड़ा इवेंट होता है तो उस पर बुर्ज खलीफा पर in Dubai they would put up these images and stuff, right, क्योंकि it's a high rise building, everybody gets to see it, तो उससे it's like there's literally it's going to be very hard for somebody not to see it, right. तो ये उन्होंने dolphins के I think just to raise awareness about how we interact with the dolphin population, तो उन्होंने ये एक आप कह लें अप्रोच किया था, राइट. so just to project this media onto the inhabitants all around New York. So this is another way कि आप एक issue को limelight में ले आते हैं. So again also think about how this affects you as a viewer. For example, आप समझें कि आप इस बिल्डिंग में इधर खड़े रहते and you see this, right? आपका क्या रिएक्शन होता? Think about it. तो हमने अभी तक जो है फ़ोटोग्राफ्स की बात की है, राइट. सो विजुअल मीडिया इज़ नॉट जस्ट फोटोग्राफ्स. आगे जाकर हम इसको आगे डिफरेंट टाइप्स भी डिस्कस करेंगे, बट
specifically for photographs, they can help build support for preserving the areas endangered by climate change, right? अगर इसकी हम कोई recent picture लें, right? Although this is a protected area, but you can use photographs. For example, this one, to raise awareness about climate change, right? So your actions are sort of melting the ice caps and the polar bears are literally drowning, therefore you must take action. तो they do have that power. But एक चीज़ आप सोचें कि आपने जब तस्वीरें देखी तो आपकी कौन सी सेंसेस यूज़ हो रही थी, राइट? बेसिकली योर साइट. यू कुड नॉट हेयर कि उसमें क्या हो रहा है आगे पीछे. यू कुड नॉट रियली फील एनीथिंग उस तरह से. So this is also like a limiting factor when it comes to photographs. But they do have that potential to build support for climate change issues. और जैसे हमने आर्ट और एक्टिविज़म की बात की थी some weeks ago, जिसमें one of your other class fellows also joined us. तो essentially there is a possibility कि वो एक emotional response create कर सकता है ये visual media. They can also work the other way around. एक तरफ हम कह रहे हैं कि yes it can create support for these major issues, but किस तरह से वो करेगा? या तो वो हमारे enhance करेगा imagination को. enhance किस तरह से करेगा? क्योंकि I haven't ever been to Yosemite Valley, या मैं कभी भी उधर ये पोलर कैप्स वाली साइड पर नहीं गई हूँ, तो आइस कैप वाली साइड पर नहीं गई हूँ, राइट? सो इट कैन इन्हांस माई इमेजिनेशन जब मैं पोलर बेयर वाली तस्वीर देखती हूँ, बट एट द सेम टाइम वो मेरी इमेजिनेशन को स्टाइफल भी कर सकता है. और अगर स्टाइफल होगी मेरी इमेजिनेशन उस तस्वीर को देखने से, तो फिर देयर इज़ नॉट मच दैट कैन बी डन, राइट? मैं मतलब मूव नहीं होंगे, आई वोंट रियली be mobilized to take any action or just take action to reduce climate, to reduce carbon emissions, for example. एक जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है इसमें वो ये है कि स्टाइफल हो जाती है इमेजिनेशन. स्टाइफल का मतलब है कि उनको रोक लेना या लिमिट कर देना इमेजिनेशन को. हाउ डू यू थिंक फोटोग्राफ्स कैन स्टाइफल आवर इमेजिनेशंस? इसको आप सोचेंगे, हम वेडनेसडे को डिस्कस करेंगे. फिर आ जाता है एक टर्म जो कि विजुअल आर्ट में या विजुअल मीडिया में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड इट्स कॉल्ड अफोर्डेंस. अफोर्डेंस क्या है, और स्पेशली अगर विजुअल मीडिया इन रिलेशन टू एनवायरमेंटलिज्म और क्लाइमेट चेंज हम डिस्कस करें. अफोर्डेंस एक ऐसा वर्ड है जो कि इट वॉज कॉइन्ड इन 1966, तो इससे पहले ये एग्जिस्ट नहीं करता था, बाय गिब्सन, who basically explained it इस तरह से: the affordances of the environment are what it offers the animal, what it provides or furnishes, either for good or ill. And what he meant by affordance was something that refers to both the environment and the animal in a way that no existing term did. It implied the complementarity of the animal and the environment. So affordance basically, अगर इसको हम simply define करना चाहें तो it's basically what, अगर हम कहें कि affordances environment ही क्या है, environment के affordances क्या हैं कि whatever it is that it offers the animal, including humans, whatever it offers humans or animals, what it provides or furnishes, either for good or for bad. और अगर हम कहेंगे कि animal की क्या affordances हैं for the environment, होगा what the animal provides for the environment, either for good or ill. ठीक है? और हमारी जो animal की affordances for the environment और humans की affordances for the environment, they've generally been in for ill, at least in the recent 100 or so years. तो ये काफ़ी यूज़फुल सी टर्म है क्योंकि इट मेक्स यू लुक एट कॉम्प्लीमेंटैरिटी. इट मेक्स यू लुक एट टू थिंग्स दैट कॉम्प्लीमेंट वन अनदर, दैट कुड potentially complement one another in terms of informing or affecting, having an impact on the other thing, right, as opposed to being in competition with one another. तो उसमें ये देखें कि इन्वायरमेंट जो है वो ह्यूमंस के लिए क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहा है और ह्यूमंस क्या इन्वायरमेंट के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, एज अपोज टू कि आर ह्यूमंस कम्पीटिंग विद द इन्वायरमेंट, इज़ द इन्वायरमेंट कम्पीटिंग विद ह्यूमंस. उससे ऑब्वियसली उसकी कॉनोटेशन ही ख़राब हो जाती है. अगर हम फिर ये देखें कि अफोर्डेंसेस मीडिया की क्या होती है, व्हाट अफोर्डेंसेस आर इनेबल्ड बाय डिफरेंट मीडिया फॉर द इन्वायरमेंट एंड फॉर अस. तो इसमें जो मेन द क्वेश्चन दैट आई वांट यू टू थिंक अबाउट इज कि एनवायरनमेंट के लिए मीडिया क्या अफोर्डेंसेस दे रहा है, राइट? सो वी फ्लैग दिस फॉर वेडनेसडे. द अदर थिंग
गोइंग बैक टू आवर प्रीवियस एक्सरसाइज, राइट, जो हमने तस्वीरें मैंने लगाई थी और फिर आई आस्क्ड यू टू सॉर्ट ऑफ टेक देम इन एंड to note down your reactions to those images. So think about what reactions you had to each of those images, polar bear की, Yosemite Valley की, या फिर वो Empire State Building की, and how you saw your place in relation to what the images depict. ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और ये मैं आप लोगों से वेंसडे को पूछूँगी कि आपने वो तस्वीरें देखी, आपका रिएक्शन क्या था उनके साथ, और उनके रिलेशन में आपने अपने आप को किस तरफ देखा, राइट. हाउ, और इसको दूसरा रिफ्रेस किया कि आफ्टर लुकिंग एट दोज फोटोग्राफ्स व्हाट डिड यू थिंक के इन्वायरमेंट की क्या अफोर्डेंसेस थी या हैं आपके लिए, बेस्ड ऑन जो इन्वायरमेंट उस तस्वीर में कैप्चर हुई थी. फिर हम आ जाते हैं विजुअल रेटोरिक पर. रेटोरिक क्या होता है? रेटोरिक अगर आप कहें कि बोलते वक्त क्या रेटोरिक होता है, इट्स बेसिकली द वे दैट यू प्रेजेंट योर आइडियाज़ एंड द वे दैट योर आइडियाज़ आर सॉर्ट ऑफ invigorating, or just the way that your ideas move people essentially, right? So approaching visual and popular media communication, popular में आ जाता है your TV shows and all that, through affordances entails considering both physical characteristics and how these characteristics interact with the person using the medium. ठीक है, इसमें दो चीज़ें जो हैं वो काफ़ी important हैं ऑब्जर्व करना. So we were talking about affordances in media communication. Physical characteristics देखना ज़रूरी है. For example, are you seeing a horizontal surface or are you seeing a slanted surface? Are you looking at something that is stationary or are you looking at something that's in motion? ठीक है, वही मैंने आपसे जब कहा था कि आपकी कौन सी सेंसेस यूज़ हुई थी when you were looking at those photographs, सिर्फ sight, if you could not hear what was going on, for example. और अगेन जो कैमरे का एंगल है, क्या वो आपको एक सरफेस जो है ग्राउंड फॉर एग्जांपल वो इस तरह कैप्चर करे या फिर वो उसको स्लांट करके कैप्चर करे. सो दैट्स लाइक अनदर अफोर्डेंस दैट द मीडिया कैन प्रोजेक्ट ऑन टू द कंज्यूमर और टू द पर्सन यूजिंग दिस मीडियम. ठीक है, एंड देन ऑल्सो के जो कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें प्रेजेंट हो रहे हैं वो आपके साथ किस तरह से इंटरेक्ट करें. उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सोचने वाली वो क्या है कि, और वो गिब्सन ने ही पॉइंट आउट की है कि अगर हम कहें कि एक नी हाई सीट है, ठीक है, नी हाई यानी कि आपके घुटनों के लेवल की कोई चेयर है या सीट है, तो घुटना किसका, ये भी आपको क्वेश्चन जो है वो करना ज़रूरी होता है. क्योंकि एक एडल्ट का घुटना ऑब्वियसली इज गोइंग टू बी हायर कंपेयर टू द चाइल्ड का घुटना, बिकॉज दे आर ग्रोइंग, राइट, सो देयर उनका घुटना विल बी एट अ लोअर लेवल. तो अगेन जो आपका कंज्यूमर है उसके हिसाब से आपको कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट करने हैं. And this is like a key thing for using visual rhetoric to sort of drive notions of, you know, environmentalism or climate change home. It's also important to understand how visual images or visual media fits into the larger ecosystem of images and texts. यानी कि आपने एक तस्वीर खींची, लेट्स से किसी नेचुरल पार्क, कोई यू नो जो बिल्कुल आपका नेशनल पार्क वाला एरिया, उधर की आपने तस्वीर खींची. देन यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड हाउ दैट इमेज फिट्स इनटू द लार्जर इकोसिस्टम ऑफ इमेजेस एंड टेक्स्ट, यानी कि बाकी जो टेक्स्ट हैं उसके साथ कौन कौन से कॉरेस्पॉन्ड करेंगे. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं योसेमिटी वैली वाली किताब वाली फ़ोटोग्राफ लेती हूँ, वो काफ़ी सारी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर यूज़ की जा सकती थी. ठीक है, क्योंकि मैंने आपको नेटिव पॉपुलेशन का भी बताया, तो इट कुड बी यूज इन अ book that talks about how the native populations of the United States were erased. या अगर आप उसको किसी environmental वाली बुक में लेकर जाएंगे तो फिर you would, you know, talk about the environment and how in this photograph you can see कि, you know, humans are not interacting, nature is, you know, at its finest and whatnot. Sorry. So again you have to understand the context of where these images are placed. Now visual rhetoric, it functions both pragmatically, practically to persuade and constitutively to construct or challenge a particular seeing of nature or what constitutes an environmental problem. So visual rhetoric जो है basically कि किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो तस्वीर आपको दिखाई जा रही है और किस तरह से दिखाई जा रही है, उसके अंदर आपको क्या अफोर्डेंसेस दिखाई जा रही हैं, क्या अफोर्डेंसेस हैं उस मीडिया की आपके लिए. इट कैन वर्क प्रैक्टिकली और प्रैग्मेटिकली टू परस्यूड. ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली उसका मेन जो एम है वो क्या होगा, तस्वीर इस तरह की लाने का कि आपको वो
परसुएड या आपको कन्विंस करे कि नहीं आपको ये एक्शन लेना चाहिए क्लाइमेट चेंज के उसको स्टॉप करने के लिए. एंड कॉन्स्टिट्यूटिवली यू कैन ऑल्सो कंस्ट्रक्ट और चैलेंज अ पर्टिकुलर सीइंग ऑफ नेचर, ठीक है, और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम कि वो चैलेंज भी कर सकती है कि आप पहले मे बी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम किसी और तरह से देखते हो, बट देन अगर वो इमेज बहुत ही डिफरेंटली आपको प्रेजेंट की जाएगी तो फिर योर perspective will also be challenged and your horizons will essentially be broadened. So visual rhetoric is also very very important. फिर आ जाते हैं visual condensation symbols, VCS इसको मैंने लिख दिया है इधर just so it can be less confusing. Visual condensation symbols क्या होते हैं? ये condensation symbols की एक टाइप आप कह लें. Condensation symbol क्या होता है? This was defined by Graeber in 1976 and he defined it as a name, a word, a phrase or a maxim which stirs vivid impressions involving the listener's most basic values. ठीक है, तो बेसिकली कंडेंसेशन सिंबल क्या चीज़ है जो कि आपकी वैल्यूज़ को एक तरह से प्रोवोक या फिर आपकी वैल्यूज़ को लाइमलाइट में ले आता है इन योर विजन या इन योर थॉट्स. कोई भी अगर वर्ड हो गया या नेम हो गया, I'm thinking of a word or phrase that would work in this situation. Let me think. Can you think of any word जो कि condensation symbol के लिए work कर सकता है for any of you? Right, so think about your most basic values and then think about a word that would sort of make that value come to the forefront, क्योंकि हमारे अपने value sets तो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, we come with a lot of values but all of those are not really brought to the forefront all the time and it's very very important कि आपका जो वो वाला value system है वो सामने लाया जाए. ठीक है, अब for example अगर मैं आपको ये word देती हूँ, right, so if you hold very strong values about family or about the importance of family, तो ऑब्वियसली अगर मैं इधर लिखूँगी फैमिली तो फिर आपका एकदम से अटेंशन जो है वो उस तरफ जाएगी. सो विजुअल कंडेंसेशन सिम्बल्स दे वर्क इन अ सिमिलर वे बट दे डू इट विद विजुअल्स रादर देन वर्ड्स और फ्रेजेस, राइट. इट यूजेस विजुअल्स. जिस तरह वो पोलर बेयर वाला तस्वीर अगेन हो कहते हैं, वो उसका क्या मकसद क्या है कि इट्स गोइंग टू वर्क एज अ विजुअल कंडेंसेशन सिम्बल सो दैट इट कैन स्टर विविड इम्प्रेशंस इन्वॉल्विंग द व्यूअर्स मोस्ट बेसिक वैल्यूज़. हो सके कि अगर आपकी मोस्ट बेसिक वैल्यूज़ के अंदर हो, लेट्स से केयरिंग फॉर एनिमल्स फॉर एग्जांपल, तो ऑब्वियसली उस विजुअल को देख के यू विल बी योर वैल्यू विल बी एक्टिवेटेड एक तरह से. एक सिंबॉलिक इवेंट या साइन के अंदर VCS जो होते हैं दे कैन कंडेंस powerful emotions, memories or anxieties about some event or situation, right. तो बेसिकली आपकी वैल्यूज़ को वो एक्टिवेट करके वो आपके अंदर एक पावरफुल इमोशन. रिमेंबर व्हेन वी डिस्कस कि इमोशंस जो है वो इज़ बेसिकली द करेंसी थ्रू विच आर्ट वर्क कैन मोबिलाइज पीपल. सो दैट्स व्हाट VCS does. Now within the context of melting ice and news of climate change, images of polar bears they do function as visual condensation symbol, right, क्योंकि ये सबसे कॉमन एक तरह से डिपिक्शन हो जाती है ग्लोबल वार्मिंग की. तो देन यू कीप थिंकिंग अबाउट राइट कि आपका इससे रिएक्शन क्या होता है. अगेन लुक एट दिस पिक्चर, इसका आपके साथ क्या रिएक्शन हुआ है? क्या आपकी कोई वैल्यू जो है वो एक्टिवेट हुई है? वर यू मूव बाय दिस पिक्चर? थिंक अबाउट इट. नाउ लुक एट दिस पिक्चर. इसको देख के आप में क्या रिएक्शन आया? आर यू मूव्ड बाय दिस एज वेल? आर यू मूव्ड बाय दिस पिक्चर मोर देन यू आर मूव्ड बाय दिस पिक्चर? इन दोनों में डिफरेंसेस क्या आपको लग रहे हैं? आई मीन द मोस्ट ऑब्वियस डिफरेंस इज लाइक कि दिस इज अ पोलर बेयर एंड दीज आर ह्यूमन बीइंग्स, बट ये भी क्लाइमेट जस्टिस के ही बारे में दे आर रेजिंग देयर वॉइस अबाउट क्लाइमेट जस्टिस. सो क्वेश्चन फिर ये आता है व्हेन वी से कि images of polar bears can function as a visual condensation symbol, why is it that images of people who are also suffering from climate change they don't really function in the same way?
And this is me assuming that you did not have the same reaction to this as you had to the polar bear picture. Right, क्योंकि क्वेश्चन पे यही आता है क्योंकि we've talked about climate migration as well. Climate migration also means these people are going to be essentially displaced from their livelihoods and from their places of living. But उनकी तस्वीरें might not really evoke the same reaction, and that's another thing to consider. So what is in a visual? To wrap up the photographs wala section, what gets framed for in an image or a photograph is important. कि क्या चीज़ आपको फ्रेम की जाए. फ्रेम करने का क्या मतलब है कि अगर मैं जाती हूँ, ठीक है, एक फॉरेस्ट में, so I'm going to take some time to draw out an apparent forest. So मैं nature walk, I'm like walking around in nature and I come across this forest. मेरे पास कैमरा है, मैं कहती हूँ I'm going to like, this is a very good picture of nature and stuff and I'm going to take a photograph. But as a photographer मेरे पास total freedom है कि मैं क्या क्या दिखाऊँ, right? अब let's say कि इधर एक पार्ट है जहाँ पर बहुत ज़्यादा गार्बेज गिरा हुआ है और इधर एक पार्ट है जहाँ पर पानी शानी है. So as a photographer अब मैं क्या चीज़ इनकोड करना चाह रही हूँ, we will talk about encoding and decoding later, but as a photographer मैं क्या चीज़ इनकोड करना चाह रही हूँ अपनी इमेज में is important. I could take different kinds of pictures, right? या तो मैं ये कर सकती हूँ कि मैं कैमरे के थ्रू अपना ये वाला पार्ट सिर्फ फ्रेम करूँ, राइट? सो इमेजिन करें कि ये मैंने फ्रेमिंग करी, दिस इज माई कैमरा जो कैप्चर कर रहा है मैंने ये तस्वीर. या फिर मैं ये कर सकती हूँ कैल शो कि लुक वी हैव लाइक अ वेरी गुड नेचुरल स्पॉट इधर, वी आर टेकिंग केयर ऑफ नेचर एंड ऑल दैट. या मैं इस चीज़ को फ्रेम कर सकती हूँ एंड आई कैन शो कि वी आर डिस्ट्रॉइंग नेचर एंड ऑल दैट. तो what gets framed in an image is very important. Equally important is what does not get captured. अगर मैं ये वाली तस्वीर ले रही होती तो फिर मैं ये ना कैप्चर करती. अगर मैं सिर्फ ये वाली तस्वीर लूँगी तो मैं ये नहीं कैप्चर कर रही, ये जो रिवर वाली साइड है. So again, what gets captured is important, but also what does not get captured within the frame is important. So the question I have for you is, what difference would it make if an image of a climate change refugee became the new condensation symbol, visual condensation symbol? क्योंकि मैंने जो पहले दो फोटोग्राफ्स में बात की थी. Do you think polar bears on broken ice are more visually resonant than people walking through floods, and why? So think about this question and we'll come back to it on Wednesday. Next we're going to look at art. So take some time to look at this painting. It's by Monet and it's called Water Lilies. इसको देख के आपका क्या रिएक्शन हो रहा है? What do you see first of all? What can you say about, let's say, the brush strokes? How realistic is this? And also what are your reactions? Okay, एक ये होगी painting, and then we have this one. This is Utagawa Hishigi's Mountains and River on the Kiso Road. So again, इसको भी आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लें कि what are you seeing? Are you able to tell कि क्या चीज़ दिखाई जा रही है और आपका रिएक्शन क्या है? इस पेंटिंग के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं नज़र आ रही, और आपके इमोशनल रिएक्शंस क्या हैं, और अगर नहीं है तो दैट्स ऑल्सो लाइक अ थिंग दैट यू शुड नोट डाउन कि अगर आपका इमोशनल रिएक्शन नहीं है. एंड देन वी हैव दिस वन. सो जॉर्जिया ओकीफीज समर डेज. इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है, किस प्रोपोर्शन में नज़र आ रहा है, क्या रिलेशन में नज़र आ रहा है, एंड व्हाट if you have to describe this picture, for example, in a few words, this painting, तो किस तरह आप करते हैं? तो इन्वायरमेंटल आर्ट जो है आजकल में, इट रेफरेंसेस आर्ट वर्क मेड बाय टू टाइप्स ऑफ आर्ट. जिसे हम कहते हैं आर्ट जो इन्वायरमेंटल आर्ट हो.
एक कौन से होते हैं जो कि फोरग्राउंड करते हैं पर्टिकुलर मटेरियल्स इन देयर वर्क सच एज पिक्स, स्टोन्स, फ्लावर्स एंड मड. फॉर एग्जांपल इसके अंदर हैड फ्लावर्स, इसके अंदर यू हैड लाइक अ होल लैंडस्केप, एंड इसमें यू हैड वाटर लिलीज एंड फ्लावर्स वगैरह. एंड those artists who foreground particular materials in their work and display their pieces in the outdoors or in galleries, and those who aspire to communicate about environment problems through their work. ठीक है, दो चीज़ें हो सकती हैं कि या तो इन्वायरमेंटलिज्म आर्ट में कैसे आएगा जब आप आर्ट मतलब यू इनकॉर्पोरेट नेचर, यू इनकॉर्पोरेट सर्टेन मटीरियल्स इनटू योर वर्क, यानी कि आप पेंटिंग के अंदर वो सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट करें, या फिर आप अपने काम के ज़रिए कम्युनिकेट करें अबाउट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स. तो एक होता है कि यू जस्ट पुट दीज थिंग्स इन योर आर्ट, और फिर you might have encoded it as environmentalism, but जो decode कर रहा है वो maybe differently करेगा, right? In the same goes for this. Or you can communicate about environmental problems through your work. तो जो पहला वाला इसमें है वो सारे ये थे जो हमने 3 दिखाए हैं, और जो सेकेंड वाली इसमें कैटेगरी है वो ये आ जाती है, right? So this is So this is Chris Jordan और उन्होंने आर्ट बनाया था, इट्स कॉल्ड जायर. Right, so इसको I don't think I can zoom in right now, but oh I can. So this is the recreation of another painting by a famous Japanese artist, but इसके अंदर he's incorporated like pieces of garbage. इसको let's see if I can zoom this further. No, I can't. ठीक है, so just zoom into it and see what you can see. और इसके नीचे मैंने slide में link भी दी हुई है where you read more about this work and what it represents. He's done a couple of paintings इस तरह की. ठीक है, आर्ट भी हमने डिस्कस कर लिया. देन वी हैव डाटा विजुअलाइजेशन विच इज़ समथिंग दैट्स वेरी वेरी कॉमन प्लेस आजकल, एंड इट्स समथिंग दैट अ लॉट ऑफ वर्क इज़ बीइंग डन ऑन. देयर इज़ अ लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलप्ड फॉर इट. बट विद डाटा विजुअलाइजेशन द assumption is that more people will be moved by information or data if it can be summarized in a single frame with compelling connections and or quantification illustrated quickly. So data visualization का मकसद क्या है? Because not everybody knows how to interpret data. ठीक है, इतना ज़्यादा स्पेशली नाउ देयर इज लाइक लॉट ऑफ डेटा बीइंग कलेक्टेड ऑल द टाइम. नॉट एवरीबडी कैन सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंड कि ठीक है इतना डेटा है, हाउ डू आई इंटरप्रेट इट, व्हाट्स द स्टोरी दैट्स बीइंग टोल्ड. एंड दैट्स व्हेन विजुअलाइजेशन ऑफ डेटा कैन प्ले अ की रोल, क्योंकि इट कैन टेल अ स्टोरी, इट कैन मेक इंफॉर्मेशन डाइजेस्टेबल एंड कॉम्प्रिहेंसिबल फॉर द कंज्यूमर and for people who don't necessarily have all the time to figure out कि क्या हो क्या रहा है इस डेटा में. एक बहुत अच्छा एग्जांपल आ जाता है जो एयर क्वालिटी इंडेक्स वाले रिप्रेजेंटेशंस आ गई हैं, स्पेशली नाउ विद द कोरोना वायरस देयर अ लॉट ऑफ कंपैरिजंस बीइंग मेड. सो फॉर एग्जांपल ये लाहौर का दिखा रहे हैं, इन जनवरी उसका AQI वाज 496, अब इट्स 37, सो इट्स शोइंग हाउ what the difference is. तो ना आपको सिर्फ नंबर नहीं दिखा रहे, but it's also being accompanied with some visualization. So this is one good example, and then the other one is what places like our world and data do, right? So उन्होंने, for example, this is economic impacts of 2 degrees versus 1.5 degrees temperature rise. So this basically shows difference in projected change in annual GDP, basically economic impact है. And I think this is accompanied by, so this basically shows through these different color coding कि कितना impact आएगा based on कि या 2 degree की warming हो रही है या फिर 1.5 degrees की हो रही है. This is like one part of this visualization. I'll share a link hopefully जिससे आप इसका सेकेंड पार्ट भी देख सकेंगे फॉर कंपैरिजन, बिकॉज देयर इज ऑन द वेबसाइट देयर इज लाइक सम, इट्स वेरी इंटरैक्टिव ऑन द वेबसाइट, बट आई कांट डू द शिफ्ट बिटवीन 2 and 1.5 डिग्रीज ओवर हियर. फिर हम आ जाते हैं वीडियोज़ एंड मार्केटिंग पे. सो आई एम गोइंग टू शो दिस वेरी शॉर्ट क्लिप राइट नाउ
and include a warning here क्योंकि इसके अंदर it's slightly disturbing, right? So अगर if you think that it will be there's like a lot of blood in it, so if you think you'll be disturbed by it, so maybe 3 minutes आप आगे skip करें. Notice this link is not working. I'll just play it from here. Right, kids, just before you go, there's a brilliant idea in the air that I'd like to run by you. Now, it's called 10-10. The idea is everyone start cutting their carbon emissions by 10%, thus keeping the planet safe for everyone, eventually. Now, this hasn't got to be a huge thing, but I would love it if you and your families would think about doing something. What sort of thing, miss? Well, like getting your dad to insulate a loft, or taking your next holiday by train instead of flying, or buying energy-saving light bulbs. We're thinking of using our car less. I'm going to cycle to school. That's fantastic, Jemima. Now, no pressure at all, but it'd be great to get a sense of how many of you might do this. Just a rough percentage. That's fantastic. And there's not. Philip and Tracy. That's fine, that's absolutely fine. Your own choice. Okay, class, thank you so much for today, and I will see you all tomorrow. Oh, just before you go, I just need to press this little button here. Now, everybody, please remember to read chapters 5 and 6 on volcanoes and glaciation, except for Philip and Tracy, of course. Right, just want to check on that 10-10 thing. Had some brilliant ideas from lots of you how the firm can cut down emissions by 10%. Just quick show of hands, everyone who wants to get involved. Great, that's nearly everybody. And yeah, just for the record, no pressure. Those who aren't quite convinced about it yet. Cool, no problem. Your choice. Okay, so those of you planning something here or at home should probably get working on it. Oh, gorgeous. Those of you who aren't, excellent. Have a great weekend, everyone. Well, hello everyone. It's great to be back here at Spurs. So many happy memories for me. Anyway. Tell me something, what is this 10-10 thing the club is doing? Well, it means that we're trying to cut our carbon emissions by 10% this year, and Tottenham Hotspur Football Club was the first to sign up. We've changed the floodlights at White Hart Lane, so they're low energy. Lots of our fans are coming to matches on buses, trains, bikes and stuff, rather than coming by car. I see. Whatever, I wouldn't do it. It seems like distraction from football to me. Well, it's just fine, David. You don't have to join in, just ignore it. No pressure. Well, let's do some penalties. 10-10. Hundreds of thousands of people, schools, businesses, hospitals, movie stars, knitting circles, scout troops, presidents and governments, all tackling climate change in more than 40 countries. Care to join us? No pressure. Right, so this did not go down well. In 2010 में एक
promotional videos इनकी बनाई गई थी, and obviously people were not very happy with what exactly they presented, right? This was a very violent thing. Basically, it did not go down well. So what did you think of this video? We'll discuss your reactions on Wednesday. Now, they intended कि इसको हमने humorous बनाना है, but in the end, it wasn't really funny. I'm sure none of you laughed either. I did not laugh at this. Now, the humor often championed by digital media, because this was basically like उन्होंने 10.10 एक activist group एक तरह से कह लें या एक campaign थी where they wanted people to reduce carbon emissions by 10%, for example. उन्होंने they hired like this marketing company to make a video for them, but it did not really translate that well. So the humor often championed by digital media as a contemporary affordance of media-savvy consumers. It can backfire when one is not in touch with one's intended audiences. तो आपने जैसे देखा होगा मैंने पहले encoding और decoding की बात की थी, ठीक है? तो जब आप वीडियो बना रहे तो you have to be like very much in touch with your audience कि आप कौन सी audience है जिसके लिए आप बना रहे हैं. So if you don't do that, then you're not going to be able to encode it properly and the audience won't decode it properly. So we also now have live streams, which means कि आप real time access to environmental disasters भी आपके पास अब है. तो videos function in sort of two different ways, right? एक तो हो गया कि no pressure की तरह की जो videos होती हैं marketing के लिए ज़्यादा, and also okay, now information and visuals are so easily accessible and present for everybody, right? अगर live stream है, for example, you can watch that on your Instagram, on your Facebook, anywhere actually. और ये एक video है, this is somewhat long, but ये BP oil spill जब हुआ था उसके बाद after a lot of activism, after a lot of demands for being able to see live video कि उसका extent of the oil spill देखा जा सकता, तो फिर finally around like 2010 I think 2009 में spill हुआ था, and then 10 में they provided this live stream ताकि जो river जो deep वाली side है उधर जाके scientists could also see कि इसका कितना extent है disaster का. So two types of videos essentially. फिर आ जाती हैं डॉक्यूमेंट्रीज, आ जाती हैं मूवीज़, आ जाती हैं और शोज़ आ जाते हैं. The communicative goal of movies or these shows or images is usually to hope that these ethical communities will be transformed through the experience and after the viewing is over take additional action. Basically आपका एम क्या होता है जब आपने environmental documentary for example बनानी है कि आपने लोगों को कन्विंस करना है या जो कंज्यूमर ऑडियंस आपकी है उसको कन्विंस करना है कि वो कोई एक्शन ले. We can also try to identify not only the aesthetics and content of the cultural text, but also the values that might enable someone to decode it from a particular position, right? So अगर आप documentary for example बना रहे हैं, तो they are very much informed, they can very much be informed by the cultural context of the producer or whoever is in control of the documentary, right? But अगर एक इतने large scale का आपके पास issue है जैसे climate change, so you want to be able to appeal to not just your own culture, not just your own boundaries, but you want to appeal to the whole world or to the entire population. So again you need to make sure कि आप जो context is right should not be very very specific to your own culture. It should be more relatable. जिस तरह से एक तरह से no pressure वाली जो वीडियो थी, एक in some ways it was मतलब अगर classroom setting जिसमें मैंने दिखाई है that is relatable for everybody, right? But football वाली setting maybe not everybody would relate to it, but that was a disaster in itself. Any medium may be analyzed on the one hand by how producers are encoding the message, on the other by how audiences or receivers are decoding it. Audiences may decode images in divergent ways. अब इसमें दो चीज़ें important है. एक तो है encoding. क्या होता है encoding? होता है कि जिस तरह से अगर मैं कोई प्रोड्यूस कर रही हूँ डॉक्यूमेंट्री या मैं कोई इमेज ले रही हूँ तो मैं उसमें इनकोड क्या करना चाहती हूँ. जैसे मैंने आपको पहले वो फॉरेस्ट वाला जो ड्रॉ करके दिखाया था, लेट्स जस्ट गो बैक टू दैट, राइट? ये अगर मैं ये वाला फ्रेम आपको भेजती ये वाला, तो इसमें मैं इनकोड क्या कर रही थी कि ट्रैंक्विलिटी, हार्मनी, नेचर एंड ऑल दैट. अगर मैं ये वाली इमेज आप लोगों को भेजती तो उसमें इनकोड में क्या कर रही होती, हार्मिंग नेचर, वेस्ट मिसमैनेजमेंट एंड ऑल दैट. तो अगेन डिफरेंट तरह से मैं इनकोड कर रही थी आपको चीज़ें व्हेन आई वाज प्रिटेंडिंग टू टेक दिस पिक्चर्स. इनकोड तो कर दिया प्रोड्यूसर ने, बट जो कंज्यूम कर रहा है वो ऑडियंस है, जनरल पब्लिक, एंड दे आर गोइंग टू डिकोड इट
इन डिफरेंट वेज। डिकोड का क्या मतलब होता है कि अगर मैं कोई तस्वीर देखती हूँ तो मैं उसमें से क्या मीनिंग निकाल रही हूँ। जिस तरह अगेन थ्रू आउट दिस लेक्चर मैंने आप लोगों से पूछा कि ये तस्वीर है, इसका आपका क्या रिएक्शन है। ऑब्वियसली सबका एक तरह का रिएक्शन नहीं होगा, और क्योंकि एवरीबडी कम्स फ्रॉम अ डिफरेंट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट तो और डिफरेंट बैकग्राउंड, इवन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, राइट। तो अगर मैं एक तरह से इंटरप्रेट कर रही हूँ एक इमेज तो हो सकता है कि समबडी इन साउथ अफ्रीका वुड इंटरप्रेटेड इट डिफरेंटली, राइट। तो ये भी चीज़ें होती हैं। नाउ द रीडिंग मेंशंस सिम्पसन्स का एक एपिसोड कॉल्ड ट्री हाउस ऑफ हॉरर 24 in season 25. You can watch this if you have time. This is available on YouTube, but मैंने कुछ links screens पर वैसे भी लगाए हैं. You can watch those as well. So we'll just sort of discuss it in a show as famous or as widely known as Simpsons. उसमें उन्होंने environmental issues को किस तरह से encode किया है. So decoding, there are 3 ways a media consumer might decode a cultural text. ठीक है, एक हो सकता है dominant position जिसको कहते हैं when the consumer agrees with the text cultural biases, कि मैं जो भी चीज़ें मैं कहती हूँ हाँ नहीं ये it's rightly presented and all that. Oppositional position क्या है when the consumer rejects the text's cultural biases. Again I would say कि नहीं, I don't agree with whatever is being shown and how it is being shown. Negotiated position क्या है, जो middle ground होता है when the consumer accepts some of the text's cultural biases but rejects others, right? तो इन तीनों टाइप्स की डिकोडिंग को भी सोचना ज़रूरी है. फिर आ जाते हैं मीम्स. मीम्स ऐसी चीज़ें जो कि कॉस्मिक पिज़ुरो did not include in their discussion, right? But it is a cultural force in present times. We all relate through memes to a lot of things. Memes are how we sort of process a lot of disasters, a lot of events around us as well, right? So what can we say about the affordances, if any, of memes? कि memes हमारे लिए क्या provide करते हैं for us, and specifically environmental memes. So I'm going to add environmental memes. I don't want you to think about just all kinds of memes, but specifically जो environmental memes होते हैं उनका क्या affordances हैं for us, और हमारी क्या affordances हैं for environmental memes. What impact do they have, and how do consumers decode memes? I'm sure you are very well aware of different memes on the environment. How do you decode them? अगर examples चाहिए तो I have some examples here, right? So this is one, and we have this one, and we have this one right there. Reserved for green vehicles, so this guy thought it's for green colored vehicles, not environmentally smart cars and stuff. So how do you decode these? और आपका रिएक्शन जो है वो कितना लॉन्ग लास्टिंग होता है, राइट? सो इससे आपका रिएक्शन क्या होता है कि यू नीड टू सेव द इन्वायरमेंट, और आपका रिएक्शन होता है कि हाँ 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 दिस इज़ फनी एंड वी गो ऑन. So that was it for today. 2 questions जो हैं I want you to think about. One is कि are all visual media types the same? अभी आज हमने काफ़ी सारे डिस्कस किए. Do you think all of them have the same impact, या different होते हैं, और अगर different होते हैं तो क्यों होते हैं? And then secondly, and the most important one is, what type of experience is this? Experience, and by this I mean कि जो आज हमने सारी visual media discuss किया है, what type of experience is this between you as a consumer and whoever the producer of the visual media is, right? So between you and the media, क्या experience है ये? Think about this very deeply, and I'll put these questions up on Wednesday as well. So I'll see you on Wednesday.